Hi friends, I am Dr.satish. I am a academician as well as uh, classical homeopath. Today we will start the series of lecture on the compare and contrast. I am a teacher in homeopathic mathematics department. So I will find that there is some guidance requirement for students who will appearing in the exams. So I have prepared some notes and I will like to share you with all of you. So let's start. So compare and contrast second year BHMS course. Rules for compare and contrast is in comparison there have you have to write similarities of remedies, and in contrast you have to write dissimilarity of remedies. One cannot describe symptoms that is not present in a remedy, as for example in contrast between arsenic and aconite. Aconite has highly fear of death, while arsenic has not so much fear of death. This is a wrong method of presentation of contrast. So these type of symptoms you have to avoid. In contrast, you have to present the quality or characteristics of remedy that is not present in other remedy. So if you want to compare and contrast between aconite and arsenic, then you have to write aconite has tremendous fear of death and arsenic has tremendous anticipatory anxiety. So this point is differentiating. You cannot write that these had these type of symptoms and this remedy has not. So this is wrong presentation. You have to write what is present in the remedy. So okay, let's first important uh, compare and contrast is aconite and Baptisia fever. Both have high rise of temperature with great nervousness, chilliness, and aching pain, especially in head, back, and limbs. Both have high rise of temperature with great nervousness, chilliness, aching pain in the head, back, and limbs. Both have delirium during fever. ये ये दोनों symptoms आपको दोनों में मिलेंगे. What is differentiating means contrast. In aconite there is a आपको contrast का presentation ऐसे ही रखना चाहिए, बराबर. जैसे हम बच्चे थे तो हमारे प्रिलिमिनरी या फिर सेकेंडरी एजुकेशन में हमें क्या आता था, कॉन्ट्रास्ट आते थे, तो उसको कैसे बीच में लाइन करके हम लिखते थे. इसका प्रेजेंटेशन वैसे ही होना चाहिए. So aconite, in aconite there is causation, exposure to dry cold air, dry north or west wind, or exposure to drought of cold air, bad effects of check perspiration, fear, pride, shock, heat of sun. और जबकि Baptisia में typhoid fever means causation is typhoid fever. It is a good remedy for typhoid fever. In aconite, there is a sudden and violent onset. In Baptisia, there is insidious onset. In aconite, there is face is red or pale and red alternately, anxious and frightened expression, sensation of face, growing or swallowing. On rising, the red face becomes deathly pale and he feels dizzy. In Baptisia, the patient is very weak, prostrated, besotted, and the face looks like that of a drunkard. His face is flushed, dusky, and dark red, in incapacity of thinking anything, unable to fix the mind on any work, and is perfectly indifferent with aversion to mental exertion. Decubitus may also be noticed. This is the differentiating symptoms of one is aconite, what is in the aconite, and what is in the Baptisia. Next point, aconite patient is very much anxious, restless, intense nervousness, tossing about in agony,
and the face is expressive of fear, fear of death, even predicts the time of death. While in Baptisia, patient says that his body is scattered and he is 2 or 3 persons and cannot cover them up properly. So he is trying to get those pieces together. The sensory is so blunted that the patient falls asleep even before he can answer a question, or he sleeps in the middle of an answer. This is delirium of Baptisia, and in delirious condition, Aconite is restless, nervous, tosses about, fear of death. These are the delirious part of Aconite. In Aconite, there is great burning thirst for large quantity of cold water during the heat stage. In the Baptisia, the tongue, characteristic of tongue. Here, there is no any related thirst symptom, but what is differentiating point in Baptisia is tongue. At first, tongue is white coated with red papilla, in the middle yellow brown and dry, and in the later it is dry, cracked and ulcerated. There is marked bradycardia, pulse is full and soft. These are the differentiating points of Aconite and Baptisia fever. What students do? Students writing the different fever, like first they are writing the Aconite fever and then Baptisia fever. This is not the methodology to present the compare and contrast. So I feel that all students will have to be guided by anyone, so he can represent the questions, represents the answers in question paper beautifully. So this is my effort to guide you. The next important uh, compare and contrast for second year is Arnica and Ledum Pal injury. What is in what is similarity means comparison of Ledum and Arnica. Both are frequently used medicines for injuries from blows, fall, contusions with extravasation of blood. दोनों में ये है, दोनों में ये symptoms मिलते हैं. Both have sore, lame, bruised feeling all over the body, aggravation from warmth of bed. Both have hemorrhage into interior chamber of the eyes, ecchymosis of leads and conjunctiva. ये symptoms दोनों में आपको मिलेंगे. So this is similarity of Arnica and Ledum Pal. What is contrast? Arnica injuries from blunt instruments. Ledum Pal punctured wounds means injuries by sharp pointed instruments like awls, nails, rat bites, mosquito bites, or blows. In Arnica, affected parts become blue and black with extravasation of blood. In Ledum Pal, there is long continued discoloration after injury. Blue and black places become green, means there is a green discoloration in Ledum Pal. There is blue and black discoloration. Emaciation of affected parts in the Ledum Pal. Arnica is infallible in chronic case of injury and consequent of chronic injury. In Ledum Pal, it is not indicated in chronic injury nor in consequent of chronic injury. This is one example that if there is, in contrast, you write if only one symptom of this type, that this is important remedy for chronic case of injury or consequent of injury, chronic consequent of injury, and this is not indicated in this type of injury. So this is one example that you can write only one symptom in the 5 marks question or 7 marks question of compare and contrast. So this is eligible, but each and every point that this has this has not, this has this has not, this has this has not, these points are, these contrast are not valid. You can write one point only. So this is compare and contrast of Arnica and Ledum injury. Next is a Symphytum and Hypericum injury. Most important question. It is asked
2-3 times in the university papers. I have seen 2-3 times. Comparison, only one comparison. Don't worry. If there is only one comparison, then write only one comparison. Then there must be more contrast in the remedies. Both are indicated for mechanical injuries. This is comparison, means similarity. Both are remedy for mechanical injuries. Differentiating point means contrast. Mechanical injuries, ailments from mechanical injuries, blows, bruises, thrusts on the globe of the eyes. While in Hypericum, Symphytum, there is a only blows, bruises, or thrust on the globe of the eyes. While in Hypericum, there is a mechanical injuries of spinal cord. Symphytum is more indicated in the bone injury as well as eye injury, external parts of the eye. While in Hypericum is a remedy for injury of spinal cord, spinal concussion, fall on the coccyx, injuries of any kind, rat bites, injuries, parts reach in sentient nerves. 3-mark symptom of symphytum is excellent remedy for fractures, while in Hypericum इंजरीज ऑफ पार्ट्स रीच इन सेंटिएंट नर्व्स. कोई भी पार्ट्स की इंजरी जो जिसमें नर्व्स ज्यादा है उसकी इंजरी के लिए हाइपेरिकम. Symphytum facilitate union of fractured bones, lessens peculiar prickling pains, favors production of callus when trouble is of nervous origin. Symphytum क्या करती है? फ्रैक्चर बोन का रीयूनियन करती है, कैलस का फॉर्मेशन को फेवर करती है, प्रिकिंग पेन को दूर करती है. जबकि हाइपेरिकम क्या करती है? हाइपेरिकम प्रिवेंट्स लॉक जो, मॉडिफाइज एंड अरेस्ट अल्सरेशन, अल्सरेशन को मॉडिफाई करती है, अरेस्ट करती है, बंद करती है, यानी कि आगे अल्सर ना हो वैसा करती है. स्लफिंग एंड टिटेनस आफ्टर ट्रॉमेटिक इंजरीज, इन सभी को प्रिवेंट करती है, मॉडिफाई करती है. अगर हो गया है तो उसको मॉडिफाई करेगी. इट प्रिजर्व्स integrity of torn and lacerated parts when almost separated from the body. It preserves integrity of torn and lacerated parts when almost separated from the body. अगर बॉडी से कोई पार्ट छूट कट गया है, कट के ऑलमोस्ट बॉडी से सेपरेट हो गया है, तो उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए हाइपेरिकम काम कर सकती है वहां पर. Fourth point of symphytum is symphytum. There is pain in eye after a blow of an obtuse body. Snowball strikes the eye. Infant thrusts into its fist into its mother's eye. तो यहाँ पर आई की इंजरी ज्यादा है और इंजरी के बाद आंख में दर्द होगा. वो कैसे होगा? कोई ऑब्ट्यूज बॉडी का ब्लो हुआ आंख पे, या फिर स्नोबॉल की स्ट्राइक हुई, या फिर इन्फेंट ने अपनी फिस्ट अपना पंजा अपनी माँ की आंख में घुसा दी, उसके ऊपर लगा दी, तो ऐसे आंख में दर्द हो सकता है, इंजरी हो सकती है. जबकि हाइपेरिकम में क्या होता है? कन्वर्जन एंड स्पाज्म आफ्टर इंजरी, ब्लो और कॉन्क्यूजन स्पेशली ऑफ हेड इंजरी के बाद कन्वर्जन स्पाज्म हाइपेरिकम में आते हैं. दिस इज कॉन्ट्रास्ट ऑफ सिम्फाइटम एंड हाइपेरिकम इंजरी. Sorry. Next important compare and contrast for second year is Aconite and Allium Cepa, coryza और respiratory symptoms. कुछ भी पूछ सकते हैं, कोराइजा पूछ सकते हैं या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पूछ सकते हैं. आपको यही लिखना है. सिमिलरिटी क्या है एकोनाइट एंड एलियम सिपा में? बोथ एक्ट्स ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोड्यूसिंग एक्यूट कैटरल इन्फ्लामेशन एंड प्रोफ्यूज डिस्चार्ज. ये दोनों में आपको मिले. बोथ हैव एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट वाइंड, और एक्सपोजर टू ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर. बोथ हैव एग्रावेशन इन द इवनिंग एंड एम्यूलेशन इन ओपन एयर. ये दोनों में आपको मिलेगा. सिंपल है. एक पैथोजेनेसिस है, एक पोजीशन है, एक मोडालिटी है. बराबर. ये 3 अलग अलग तरीकों से मैंने सिमिलैरिटी निकाली.
What is contrast? Means dissimilarity. Aconite causation, fear, fright, checked perspiration. In aconite, causation is fear, fright, checked perspiration. Allium cepa, there is causation, bad effects of getting fitbed, salad, cucumber. Means कि जो मैंने dissimilar causation है उसको लिया. Sudden and violent onset in aconite with coryza. There is croupy cough in nature. Cough is dry, hoarse, suffocating, loud, rough, croaking, hard, ringing and whistling cough. तो कफ और कोराइजा ऐसा है. जबकि एलियम सेपा में क्या होता है? देयर इज प्रोफ्यूज वाटरी एक्रिड डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज एंड प्रोफ्यूज ब्लैंड डिस्चार्ज फ्रॉम द आईज. देयर इज सेंसेशन एज इफ larynx is split or torn. Patient grasp the larynx while coughing. तो ये अलग अलग सिम्टोमेटोलॉजी है एकोनाइट एंड एलियम सेपा की इन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स. Aconite has aggravation on expiration and at night. This is different aggravating factor. Allium cepa has aggravation in warm room and amelioration in cold room is a different modality of allium cepa other than aconite. So this is compare and contrast of aconite and allium cepa respiratory symptoms. If you have any questions related to anything related to compare and contrast, you can ask in the comment section. Chamomilla and Cina, baby, child. Next important is Chamomilla and Cina, baby or child. दोनों में क्या सिमिलैरिटी? तो both baby is highly irritable temperament. Both है baby having highly irritable temperament. Mentally, the baby is highly irritable, peevish, fretful, cannot bear to be spoken, cannot bear to be looked at, cannot bear to be touched at, cannot bear to be near at. इतना highly irritable temperament दोनों में रहता है. Both wants many things but refuses everything when offered. दोनों में ये symptom. Both have crampy and spasmodic pain in abdomen. दोनों में क्रैम्पी स्पास्मोडिक पेन आपको मिलेगा. कॉन्ट्रास्ट क्या है? तो कैमोमिला बेबी हाईली एंग्री क्वाइट ओनली व्हेन कैरीड, while in Cina carrying does not give relief to the patient or to the baby. तो कैमोमिला में है क्वाइट ओनली व्हेन कैरीड, Cina में है carrying does not give relief, means carrying does not amelioration. In Chamomilla, there is one cheek red and hot and other is pale and cold. In Cina, sickly baby with one cheek red and other is pale. In Chamomilla, there is ailments from anger and aggravated by fits of anger. Mental calmness contraindicates Chamomilla. While in Cina, there is worm infestation. Every trouble are caused due to worm irritation. In Chamomilla, there is a child. Such child may suffer from convulsion, fever, or diarrhea, usually caused by anger. The diarrhea during dentition is greenish, hot, offensive, like rotten eggs. Such child may suffer from grinding of teeth, constant digging and boring of nose, screaming during sleep, indigestion, nausea, vomiting, nocturnal enuresis, pain in abdomen, mental irritability, extending even to convulsions. Desire for sweets and various indigestible things are found in Cina. तो ये Cina and Chamomilla की compare and contrast हुई. Very easy है, उसको कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं है. इसमें अलग है, इसमें अलग है. Dulcamara and Rhus Tox joints. Comparison means similarity. Both have rheumatic and gouty diathesis. Both have ailments from damp weather, working in damp places, summer bathing, river bathing. Both have soreness of affected parts. Both have amelioration by moving about. ये दोनों में मिलता है, amelioration by moving about.
Contrast in Dulcamara, there is the joints are inflamed, swollen, and red. There is aching pain, sore limb, bruised all over, feeling all over, very much sensitive to touch, lameness and stiffness in back. While in Rhus Tox, there is pain as if sprained, as if a muscle or tendon were torn from its attachment, as if bones were scraped with a knife. तो दोनों में डिफरेंट सिम्टोमेटोलॉजी है. एक में क्या है कि जॉइंट्स आर इन्फ्लेम्ड, स्वॉलन, रेड, जो कॉमन आर्थराइटिस की सिम्टोमेटोलॉजी होती है वही है. एकिंग पेन, सॉर लैम्प, ब्रूइज्ड फीलिंग ऑल ओवर, वेरी मच सेंसिटिव टू टच, स्टिफनेस, लैमनेस, ये कॉमनली हमको आर्थराइटिस में मिलता है ऐसे सिम्टम. While in Rhus Tox there is pain as if sprained, दर्द ऐसा है, ऐसा लगता है कि मोच आ गई है, या फिर मसल और टेंडन were torn from its attachment, or as if bones were scraped with a knife. In Dulcamara, there is aggravation in the evening and at night and during rest. In Rhus Tox, there is aggravation on first moving, 3-mark symptom of Rhus Tox. Aggravation on first moving, on getting up in the morning, after midnight, in wet rainy weather. These are the different symptomatology. Seventh important, most important compare and contrast is Euphrasia and Allium Cepa respiratory symptoms, or you can say coryza. कोराइजा, कफ, राइनाइटिस, आपको कुछ भी अलग अलग टर्मिनोलॉजी से पूछ सकते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स. आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में यही लिखना है. कंपैरिजन both produces lateral inflammation in mucous membrane of upper respiratory tract. दोनों upper respiratory tract में indicate होती है उनके lateral inflammation. Both have profuse discharge from the eyes and nose. Both are aggravation in the evening and from warmth and indoors. यानी कि घर के अंदर दोनों एग्रावेट होते हैं. सिंपल है, both have profuse discharge from the eyes and nose. Both have aggravation in the evening from warmth and indoors. What is contrast? Means dissimilar point. In Euphrasia, there is ailments from exposure to south wind. Most important symptom, exposure to south wind. In Allium Cepa, there is exposure to northwest wind, cold wind. Salad, cucumber, bad effects of getting feet wet. In Euphrasia, main important differentiating point of Euphrasia and Allium Cepa is its discharge. Acrid lacrimation with bland coryza in Euphrasia, acrid coryza with bland lacrimation in Allium Cepa. In Euphrasia, there is coryza extending to larynx and larynx with a hard cough and much offensive expectoration. There is tickling sensation in larynx, terrible irritation in the larynx, compelling the patient to cough, followed by pressure beneath the sternum. तो यूफ्रेशिया में क्या होता है, सर्दी होती है, वो गले तक जाती है, लैरिंग्स तक जाती है, उसकी वजह से खांसी चालू होती है, लेकिन वो खांसी इजीली नहीं आती है, और उसके साथ साथ बदबूदार कफ निकलना चालू हो जाता है, और गले में कैसा सेंसेशन लेता है, टिकलिंग सेंसेशन, यानी खुजलीपन जैसा रहता है, इरिटेशन रहता है, और वो इरिटेशन इतनी भयानक हो जाती है, उसकी वजह से पेशेंट खांसता रहता है उस थ्रोट को क्लियर करने के लिए. और खांसी के बाद क्या होता है, प्रेशर बीनीथ द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे प्रेशर महसूस होने लगता है, इतनी खांसी आती है. एलियम सेपा में क्या होता है, तो एलियम सेपा में भी लैरिंग्स अफेक्टेड होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, कैटरल लैरिंजाइटिस हो जाता है. कैटरल लैरिंजाइटिस विथ सीवियर कफ, इसमें हार्ड कफ रहता है, यानी कि खांसी काफी तकलीफ के बाद खांसी चालू होती है, लेकिन यहाँ पर सीवियर कफ यानी कि इजीली कफिंग चालू हो जाता है, विच कंपेल्स द पेशेंट टू ग्रास्प द लैरिंग्स. और खांसी के वजह से, इतनी सीवियर खांसी है, उसकी वजह से पेशेंट क्या गले को पकड़ता है ऐसे गले को पकड़ के खांसता है. तो ये एक मोस्ट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है एलियम सेपा का, जो क्लिनिकली काफी यूजफुल रहता है.
आपको ऑब्जर्व ही करना है। अगर पेशेंट खांसते खांसते गले को पकड़ता है तो उसका मतलब ऐसे ऐसे पकड़ लेता है, तो उसका मतलब ये है कि ये पेशेंट एलियम सेपा है। Seems as if the cuff would tear the legs. वो क्यों क्यों ऐसा वो पकड़ता है? क्योंकि उसको लगता है कि गला फट जाएगा, इतनी खांसी आ रही है उससे गला कहीं फट न जाए, इसकी वजह से पेशेंट क्या करता है, उसको पकड़ के रखता है। Important point of यूफ्रेशिया is cough only in the daytime. तो ये सिम्टम आपको कभी कभी एग्जामिनर आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि कफ ओनली इन द डे टाइम कौन सी रेमेडी, तो आपको पता होना चाहिए यूफ्रेशिया। दूसरी दवाइयां भी है लेकिन हम अभी यूफ्रेशिया पर फोकस करते हैं। यूफ्रेशिया कफ ओनली इन द डे टाइम, इन एलियम सेपा कफ एग्रावेशन इन द इवनिंग एंड वार्म रूम। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है यूफ्रेशिया एंड एलियम सेपा। Eighth remedy, eighth difference, compare and contrast is Arum triphyllum and Allium cepa, coryza or respiratory symptoms. Both are important remedies in acute and when in acute. Both are important remedies in acute cold when discharges from the nose is acrid and fluent. दोनों एक्यूट कोल्ड यानी कि एक्यूट कोराइजा में काम लगती है, लेकिन कब? जब डिस्चार्जेस कैसे हो, नोज में से एक्रिड एंड फ्लुएंट डिस्चार्ज यानी पानी जैसा लेकिन एक्रिड डिस्चार्ज हो, तब ये दोनों दवाई काम लग सकती, मींस इंपॉर्टेंट रेमेडी है तब ये। बोथ हैव सोर रो एंड बर्निंग ऑफ पार्ट्स। अगर एक्रिड डिस्चार्ज है तो वो पार्ट्स को क्या करेगी, रो शोर एंड बर्निंग करेगी पार्ट्स को, बराबर, नोज को, नॉस्ट्रिल को, अपर लिप को रो शोर एंड बर्निंग करेगी। बोथ हैव एलिमेंट्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट वाइंड एंड गेटिंग कोल्ड। दोनों में ये आपको मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट वाइंड, एलिमेंट्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट वाइंड एंड गेटिंग कोल्ड। व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट? In Arum triphyllum, there is constant picking at the nose until it bleeds, boring into the side of the nose. Nose bleeds, stop in spite of watery discharge. Three-mark symptom of Arum triphyllum is constant picking at the nose until it bleeds, boring into the side of the nose. यानी कि ऐसे साइड में, बराबर, और अंदर तक उसको पिक करता रहता है, इतना पिकिंग करता है, इतना पिकिंग करता है कि ब्लीडिंग चालू हो जाए तब तक। नोज फील्स स्टॉप्ड इन स्पाइट ऑफ वाटर, फ्लुएंट डिस्चार्ज है लेकिन नोज ब्लॉक। तो रेपर्टरी में आपको सिम्टम मिलेगा कंजेशन ऑफ नोज विथ वाटरी डिस्चार्ज, सॉरी। इन एलियम सेपा, three-mark symptom of Allium cepa is profuse acrid coryza with profuse bland lacrimation is the characteristic of the Allium cepa patient. In Arum triphyllum, clergy means sore throat, means throat is raw, sore, painful on clearing or coughing. जब भी पेशेंट थ्रोट को क्लियर करना चाहेगा या खांसी खाएगा तो उसको अपना थ्रोट कैसा लगेगा, रो सोर एंड पेनफुल लगेगा। पेशेंट कैन नॉट स्वेलो, क्लर्गी मीन्स सोर थ्रोट मीन्स जो गाना गाते हैं और जो बहुत बातें करते हैं उनको जो सोर थ्रोट होता है उसको कहते हैं क्लर्गी मीन्स सोर थ्रोट। पेशेंट कैन नॉट स्वेलो, उसकी वजह से कुछ भी गले में निगल नहीं पास आता है, उसको दर्द होता है निगलने में। वॉइस इज हॉर्स, अनसर्टेन, अनकंट्रोलेबल। वॉइस, बातें करने से तकलीफ हुई है तो उसका वॉइस कैसी कैसी हो गई, वॉइस इज हॉर्स, uncertain, uncontrollable, changing continually, complete aphonia। अगर ऐसा ही रहा तो आगे जाके क्या होगा, complete aphonia after exposure to northwest winds and from singing। बार बार गाता रहेगा तो धीरे धीरे उसकी आवाज चली जाएगी, बंद हो जाएगी, means complete aphonia after exposure to northwest winds and from singing। And in Allium cepa there is a spring coryza। यहाँ पर क्या है, क्लर्गी में सोर थ्रोट है तो यहाँ पर स्प्रिंग कोराइजा इंपॉर्टेंट।
यानी कि ऐसा कोराइजा जो स्प्रिंग सीजन में आता है। स्प्रिंग कोराइजा आफ्टर एक्सपोजर टू damp northwest wind discharges burn and corrode the nose and upper lip. Catarrhal laryngitis with severe cough which compels the patient to grasp the larynx seems as if the cough would pierce the larynx. तो यहाँ पर थ्रोट के बारे में एरम ट्रिफाइलम के सिम्टम्स है कि थ्रोट कैसा है, उसकी आवाज कैसी है, और एफोनिया का सिम्टम है। जबकि एलियम सेपा में कोराइजा का सिम्टम है, उसके डिस्चार्जेस कैसे है और लैरिंजाइटिस के सिम्टम। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। Next point of arum triphalum is aggravation from overuse of voice, talking, singing, heat, lying down, and at night. While in Allium cepa, cough aggravation in the evening and a warm room. So these are the differentiating point of arum triphalum and Allium cepa, coryza or respiratory symptoms. Ninth point, important compare and contrast is Natrum Mur and Pulsatilla mind. Both are highly emotional, having ailments from disappointed love. Both are highly emotional remedies, having ailments from disappointed love. दोनों इससे affect होती है. Both have weeping disposition and hypochondriacal moods. दोनों में ये मिलता है, weeping disposition and hypochondriacal mood. लेकिन for clinically understanding के लिए यहाँ पर differentiating point है weeping में ये है कि पल्सेटिला सब रोने लगती है तुरंत, और नेट्रम म्यूर को रोना आता है लेकिन वो अपना रोना किसी स्ट्रेंजर के सामने बाहर नहीं आने देगा। इसीलिए नेट्रम म्यूर का रोना आएगा लेकिन पल्सेटिला जितना फुट फुट के नहीं रोएगा वो। तो ये क्लिनिकल पॉइंट है। आपको एग्जाम पर्पज के लिए यही लिखना है कि बोथ हैव वीपिंग डिस्पोजिशन एंड हाइपोकॉन्ड्राइकल मूड, both have hysterical condition of mind. Weeping alternates with laughing, irresistible laughing at unsuitable time, weeping without any cause. पर ये उसके हिस्टेरिकल सिम्टम है। नेट्रम म्यूर एंड पल्सेटिला दोनों में ये हमें मिलता है। So what is difference? Means contrast. In Natrum Mur, there is elements from bad effects of anger, grief, vexation, excessive use of salt, bread, quinine, fright, loss of vital fluids, sexual excess, profuse menses, etc. So these are the different causation of Natrum Mur. While in Pulsatilla, ailments from eating starchy food, fatty food, ice cream, tea and coffee, abuse of mercury, quinine, sulfur, chamomilla, abortion, irregular menses, ओवेरियन एंड ड्यूट्राइन ट्रबल्स। तो यहाँ पर ये सब उसके कॉजेशन है, यहाँ के कॉजेशन डिफरेंट है। इन नेट्रम म्यूर देयर इज अ मेंटल कंडीशन व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव इरिटेबिलिटी। यहाँ पर इरिटेबिलिटी ज्यादा है। दे इजीली ऑफेंडेड एंड गेट इनटू पैशन अबाउट ट्रिफल्स। लो नेट्रम म्यूर पेशेंट कैसा हो जाता है? पैशनेट हो जाता है, यानी कि पॉजेसिव हो जाता है, यानी कि जिसके प्रति उसका प्रेम है, जिसके प्रति उसका इमोशनल लगाव है, उसके प्रति वो पॉजेसिव हो जाते हैं। और कुछ भी कहे उसके बारे में कोई, तो वो इतना ऑफेंडेड हो जाते हैं कि इतना इरिटेबल हो जाता है कि वो अपने आप में नहीं रहता है। लेकिन ड्यू टू नेट्रम, बिकॉज ऑफ द नेट्रम म्यूर्स कॉन्स्टिट्यूशन, वो खुल के अपनी इरिटेबिलिटी बाहर नहीं एक्सप्रेस कर सकेगा because of his reserved nature. Pulsatilla, there is a changeability of mental symptoms runs throughout the remedy. यानी कि ये उसका 3 mark symptom है, changeability of mental symptoms. तो यहाँ पर excessive irritability है, यहाँ पर changeability है। Third point of Natrum Mur is dreams of robbers at night and on waking will not believe to the contrary until and unless a thorough search is made of the house. यहाँ पर क्या है? रॉबर्स के ड्रीम्स आते हैं और उसको डर बहुत लगता है रॉबर्स का, और वो जग के भी उसकी ये बिलीफ शांत नहीं हो पाती जब तक वो पूरी तरीके से घर को छानबीन नहीं कर लेता, तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। इतना डर है रॉबर्स का नेट्रम म्यूर को। Pulsatilla, the patient is afraid in the evening
fears to be alone, fear of darkness and of ghosts, morbid fear of meeting the opposite sex. Patient is afraid in the evening, fears to be alone, fear of darkness, fear of ghosts, morbid fear of meeting the opposite sex is a characteristic of Pulsatilla. In Natrum Mur, consolation aggravates the state of the mind. In Pulsatilla, consolation ameliorates, means consolation gives her immense relief and comfort. So these are the important compare and contrast of Natrum Mur and Pulsatilla. Next important compare and contrast is Argentum nitricum and Euphrasia eye symptoms. The comparison, both have cataract condition of mucous membrane of eye producing cataract conjunctivitis. दोनों में म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट होते हैं आई के और उसकी वजह से कैटरल कंजक्टिवाइटिस प्रोड्यूस होता है. Both have swollen lids which agglutinate in the morning. दोनों में swollen lids मिलती है जो सुबह सुबह में agglutinate चिपक जाती है. Both have aggravation from warmth and amelioration in darkness. Both have eye symptoms, aggravation from warmth and amelioration in darkness. ये मिलता है. Contrast, Argentum nitricum has causation from gonorrhea, cataract condition, fine needle work, and eye strain. In Euphrasia, bad effects from fall, contusion, or mechanical injuries, external parts of the eyes, तो इसकी इंजरी के कारण, एक्सटर्नल इंजरी के कारण आई अफेक्ट होते हैं यूफ्रेशिया. यहाँ पर गोनोरिया की वजह से, फाइन नीडल वर्क की वजह से, आई स्ट्रेन की वजह से इंजरी होती है. यानी कि यहाँ पर इंटरनल कोज है, यहाँ पर एक्सटर्नल कोज है. Argentum nitricum has profuse purulent discharge. Cornea is opaque, ulcerated. डिस्चार्ज कैसा है? प्रोफ्यूज पुरुलेंट डिस्चार्ज, कॉर्निया इज ओपेक, अल्सरेटेड. यहाँ पर प्रोफ्यूज एक्रिड लैक्रिमेशन विथ प्रोफ्यूज ब्लैंड कोराइजा. In argentum nitricum, there is dilated pupil with dimness of vision and intense photophobia. The inner canthi are swollen and congested. Paratic condition of the ciliary muscles and defective accommodation is found in argentum nitricum. यानी कि यहाँ पर accommodation में प्रॉब्लम है, जबकि यहाँ पर एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई में प्रॉब्लम रहता है यूफ्रेशिया में. देयर इज वायलेंट ईचिंग ऑफ द आईज लीडिंग टू रबिंग एंड विंकिंग. देयर मे आल्सो बी फाइन रैशेस अबाउट द आईज विथ पफिनेस ऑफ लीड्स एंड ब्लड विजन. फाइन रैशेस अबाउट द आईज, पफिनेस ऑफ द लीड्स एंड डीम विजन, ब्लड विजन. यानी कि विजन के एकोमोडेशन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहरी जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से विजन ब्लड हो जाता है. यानी कि प्रोफ्यूज डिस्चार्ज की वजह से, जैसे हम पानी में से कैसे देखते हैं तो कैसा ब्लर विजन आता है, वैसा ब्लर विजन यूफ्रेशिया में आता है. Argentum nitricum aggravation by sitting by the side of fire and bright light, amelioration by cold application. In Euphrasia, eye symptom aggravated in the evening, exposure to south wind, and amelioration by coffee. This is important. Compare and contrast of argentum nitricum and Euphrasia. Next important point, compare and contrast is Colchicum and Dulcamara joints or rheumatism. Both have complaints of joints and or rheumatism from getting wet, damp weather, and suppressed perspiration. Both have complaints of joints and rheumatism from getting wet, damp weather, and suppressed perspiration. Both have joints are inflamed, swollen, and red. Means joints are inflamed, swollen, and red in both remedies. In Colchicum, there is ailments from heat of summer or getting wet. In Dulcamara, ailments from damp, cold, rainy weather or sudden changes in summer, living or working in damp places. So these are the different ailments and pain
Contrast of pain is colchicum, flying type of pain in hips, flying pain in the hips, tearing pain in the thighs, knee joints, with swelling in patella, tibia, calf muscles, ankles, and toes. While in Dulcamara, there is aching pain, sore limb, bruised feeling all over the body, very much sensitive to touch, lameness and stiffness in the back. In Colchicum, there is aggravation of from motion, touch, autumn, amelioration by rest and lying down, while in Dulcamara, there is aggravation in the evening and at night during rest and amelioration by moving about like Rhus Tox and Paramet. Next, Arnica and Ledum Pal joints or rheumatism. What is similarity? Both have ascending type of rheumatism. Both have joints swollen, red, inflamed. Both have unbearable pain. What is differentiating point? In Arnica, oversensitive to touch, cannot bear pain. There is great fear of being touched or struck by person coming near him. उसके नजदीक कोई भी जाता है तो उससे उसको डर लगता है कि ये टच करेगा मुझे, इससे मुझे इंजरी होगी, उसका डर रहता है. Fear in the back or fear in the back and limbs as if bruised or beaten. Cannot walk erect on account of bruised pain in the pelvic organs. While in Ledum Pal, there is throbbing pain in the left shoulder, tearing and stitching pain in the left shoulder and right hip joint. Means there is a diagonal complaints. Left shoulder and right hip. बराबर ऐसे है, लेफ्ट शोल्डर राइट हिप. तो ये एक डायगोनल सिम्टम हुआ, अपर लेफ्ट, लोअर राइट. Aggravation in the night, patient can't tolerate the heat of bed and wants to be uncovered. यहाँ पर क्या टॉलरेट नहीं कर सकता पेशेंट? कोई नजदीक आए या फिर टच करे या फिर पेन बर्दाश्त नहीं होता है. यहाँ पर हीट ऑफ द बेड टॉलरेट नहीं हो रही है और उसकी वजह से पेशेंट को अनकवरिंग चाहिए. In Arnica, there is aggravation from touch. In Ledum Pal, there is aggravation at night from heat of bed and on walking. In Arnica, there is amelioration by lying down, while in Ledum Pal, there is amelioration by cold water, holding feet in ice cold water. This is 3-mark ameliorating factor of Ledum Pal. Next important is Dulcamara and Rhus Tox rheumatism. So, both have elements from damp, wet, rainy weather. Living or working in damp places are found in both remedies. These ailments from are found in both remedies. Both have affected parts, sore to touch, stiffness, lameness, and pain are very well marked in both remedies. Both have aggravation from during rest and amelioration by moving about. What is contrast means differentiating point? Dulcamara elements from suppressed perspiration is a different thing of Dulcamara. While elements from summer bathing, river bathing is differentiating point of Rhus Tox. In Dulcamara, there is joints. The joints are swollen, red, inflamed. There is aching pain, sore limb, bruised feeling all over, very much sensitive to touch. While in Rhus Tox, right side is predominantly affected. There is pain as if sprained, as if a muscle or tendon were torn from its attachment, as if bones were scraped with a knife. In Dulcamara, concomitant wear like milky urine, catral dysuria, anasarca after rheumatism, rheumatic fever, etc. Mental confusion, cannot find the right word for anything. While in Rhus Tox, concomitant great restlessness, anxiety, and apprehension, cannot remain in bed at one place, always wants to be moved. Along with rheumatic fever, there may be heart disease. So,
This is the few compare and contrast, important compare and contrast for exam point of view for students of second year BHMS. This compare and contrast you cannot find in any book of which you are reading or referring. This is this is I have specially uh, modified and specially made for the students. So you can view it every time when you want. If you want to more update from our side, then please subscribe our channel. Thank you. Thank you. To be continued in part 2 and 3. Thank you.